जो भी मैंने डेफिनेशन ली है, ये मैक्सिमम डेफिनेशन आपको जनरली गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं उन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए। मतलब लोगों को बहुत बहुत अनुभव होता है करने के बाद, 20-20 साल काम करने के बाद भी वो चीजें वो नहीं सीख पाते हैं। उन टॉपिक पे हम जस्ट आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो डाटा है आपको कहीं पे भी मिल जाएगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, क्या पर्पज है, और हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट। तो नाउ तो वी मूव टू मेजर पॉइंट्स, because is that one is you take the anywhere. Uh, Basically, during the cost, we have the two type of cost: direct material cost and direct labor cost. So major component, direct material cost. In direct material cost, what will be considered? RM cost. Definitely, during the session we discussed how to calculate. Purchase component cost. We are also saying bought out components. Some fasteners, some standard part. So we also calculated income in direct material cost, freight and transport, import duty, taxes, storage, handling. These are income in direct material cost. And direct labor cost, of course, wages, salaries, overtime, bonus, employee benefits, and taxes, another one. Now, is the major point is come here. How to calculate material cost. We move the how to calculate the RM cost. In week, we take the one sheet metal part. This is the drawing. If you understand, part profile is one size is the 100 mm. All dimension is mm. This is the 40 mm, and this is the some flange is the 8 mm. So what will be the blank condition of that one? So blank condition 100 mm and 40 mm and 8 so any 16 plus 40 yani 56 mm. So we have a sheet metal component. This size is the 100 mm and 40 mm, and another is 8 mm. So sometime we are calculating the envelope size of component. Envelope size component is 100 mm, 40 mm and 8 mm. So after open the blank, what will be the size of blank? 55 mm and 110 mm. And component thickness is 3.15. Material grade is Fe410. ये अगर आपको ग्रेड और थिकनेस ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये सब लिखिए, हम मतलब इन पे भी डिस्कस कर लेंगे. So now we have the blank size is 55 and 110, and in the market standard size of seat 1250 and 2500. So when we purchase the size is 3.15, 1250 and 2500. So this seat weight will be 77 kg, and our blank size is 55 in 110 and seat size is 1250 and 2500. So number of component we produce from same seat 495. This is the very simple formula. We definitely discuss in, and yeah, you can calculate 1250 divided by 55 and 2500 divided by 1110, and you multiply each other and you take the in round figure. So blank, a number of blank per seat 495, and input weight, part input weight, total weight divided by number of pieces. So when we will get the input weight, so 77 divided by 495. So weight 0.15 kg. This weight will be in kg. RM, we consider the RM cost 80 rupees per kg. So that time total input RM cost 80 into 1.156. So cost will be 12.49 rupees. But our FG weight is part finish weight is 0.1 kg. So you can see
You also think ki, our input weight and 0.156 kg and FG weight 0.101 kg. So and the scrap rate we minus that now 1.156 minus 0.101. So that will be the scrap generate the each part, and we minus 12 gap into scrap rate at the rate 40 rupees per kg. So scrap value is 2.2. Our RM input cost is 12.49 and scrap value is 2.20. So our net RM cost is 10.28. This is the basic method of calculate every RM cost of every component. We consider uh, plastic component, forging component, sheet metal component, any type of component. Basic thumb rule is that one. We take the first input weight of component, and we calculate the input RM cost of component, and we reduce the scrap cost of component. Then we get the net RM cost of any component. So in if that we have the pen, if you seen that one, so this pen maybe 4 or 5 component, four element, this one, this one, this one, this one. So we consider every element different net RM cost. So maybe this the 10 paisa, this 1 rupees, 2 rupees, 1 rupees, like that. So we calculate different component RM cost. सर एफजी वेट So हमारे पास पहले से है क्या? yes, yes, एफजी जो है, एफजी वेट हमारे yes, पास पहले से होता है क्या? हाउ वी yes. कैन FG weight, कैलकुलेट एफजी yes, कैसे definitely. रहता है? In the in every drawing have the FG weight. If ओके you want to understand, so we can show the some OEM's drawing, so you can understand. Just a second, if we have the drawings, but these drawing only for the knowledge. We are not sharing the another one purpose. Uh, सर एफजी वेट इनपुट वेट माइनस एफजी वेट किया तो हमारे पास स्क्रैप वेट आ जाएगा ना? yes, yes, yes. ओके, और स्क्रैप वेट का जो रेट है उसमें मल्टीप्लाई किया तो उसका कॉस्ट आ जाएगा. Yes, yes, definitely. Now ओके we are seeing to some like that. This is the someone part. Everyone drawing. Uh, this is the FG weight ओके ओके 0.487. ओके in kg. We I consider कि everyone know to how to read the drawing, because we are discussing the product costing. Before that the discussion on that one, so I know to how to understand the drawings. So if everyone is know ki how to read drawing, so very good. If anyone have the question in drawings, so we can give the few minutes uh, the discussion in that also particular topic, if you want. यस सर वी वांट. Okay, okay. So now every customer have the own drawing standard, but similar dialog box, similar patent. Maybe we are discussing on the now Tata Motors drawing, but this drawing only for discussion. So we have the Mahindra drawing and the Ashok Leyland drawing. Same patent is same. So we discuss on that one dialog box. This is the dialog box. This is a drawing number, राइट. and every drawing number have the unique number. Sometime part number, part name will be same, but drawing number average always the difference. Like that the our Aadhaar card number. In India maybe number of Alok Sharma, but Alok Sharma have the unique Aadhaar number, so no repeat the Aadhaar number. So like that the this number is the unique number, and
every OEM, every drawing manufacturer give the one logic to generate the this number. Some OEMs give the this 4 digits to vehicle number. This is the uh, particular area number. This is the some another identify the key how to reach the after see the product number key where part is located. And initially we discussed the envelope dimension, if you remember, part envelope dimension. It is the also we required we when we dispatch the product, so we require the for packaging key what will be the envelope dimension our part. And the another one the we discuss about material thickness, and another one is the sheet grade. So this is the sheet metal part, but in plastic part always available all these numbers, envelope size, finish weight, material thickness, material grade. So now we move to our main slide. So this is the way to calculate the RM cost of every product. Now we move to next one, the process cost. First we discuss this component process cost. After that we discuss in the deep how to calculate this 50 paisa, 80 paisa, 30 paisa. In that one component we have the uh, 4 operation. One is the sharing, because we got the metal in industrial standard form. Standard form is 3.15 into 1250 into 2500. But we need to some strip. We need to 110 into 1250. So now first operation is sharing. After that we develop the some dies for making this component. So die process will be blanking, punching, bending. So we consider the key 3 die we produce this product. Now is the major point is the sharing is we calculate in kg. We are kg. We are calculating 1 rupees kg. If we do the our strip is sharing, so our strip weight is 5 kg. So our cost is 5 rupees to cut the sheet to make strip. And after that we consider the 50 paisa, 30 paisa and 30 paisa. 100 ton press machine, we calculate 100 ton paisa, 50 paisa. 100 ton machine 50 paisa. 60 ton machine 30 paisa. 60 ton machine in 30 paisa. So process cost will be total process cost 1.25. So now one question generate in our mind कि Alok ji, why is, yes sir, my one question is how we define this for 100 ton 50 paise, 60 ton point 3 paisa. Is there any back calculation? yes, definitely during this session we also discuss in back calculation. Oh, okay. This also I am reaching this point ki how to write the 50 paisa 400 ton. Why we not write to 40 paisa 1 rupees 80 paisa. So this is the one calculation of each machine and each stock. And also one major point ki in us industries our cost 450 paisa, maybe in a big company in like Tata Motor this cost will be 1 rupees, and someone Europe and other country this cost maybe 2 rupees. So it is also difference, matlab, cost is vary place to place and company to company. So everyone know to how to key what is the cost of my machine per stock. If we are making some plastic part, we have the molding machine.
So I know ki what is the expenses in one stock या one component during the develop our plastic component या casting component या forging component. So one similar concept to calculate. So now we move the of our measure point. He how to calculate the 50 paisa for 100 ton, yeah 30 paisa for the 60 ton. This is the calculation for 63 ton press machine per stock rate. फुल स्क्रीन कीजिए साहब. Just a second. Yes, correct. जब भी हम कोई भी मशीन हो, देखिए किसी भी मशीन का जो रेट है वो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. वी डू टू मेथड ऑफ द कैलकुलेशन. वन इज द आवरली रेट कि व्हेन वी रन द आवर लेथ मशीन 1 hour या आवर वीएमसी 1 hour या सीएनसी 1 hour, what will be the actual running cost. And the second one, number of parts so this is the similar process. We adopt the hourly, we calculate the number of per stock या per part, and also we calculate the per meter. Sometime we are doing the welding in some component, so that one that type we require the per meter cost. When we do the welding per meter, so what will be the cost? So we require this is a basic method to calculate our machine cost per hour, per meter, yeah, per stock. So major element of five major element. Number of depreciation. So we calculate the depreciation of machine. So this is the depreciation. Just a second. This is the column of depreciation. First point is the period of depreciation. We are considering the 7 year. So sometime we are considering the 5 years, sometime 15 years. So how to calculate the what is the standard formula of the life? Yeah, we can also see life of our machine. So everybody is know to what is the life of VMC. It's about 15 years, 15 years. Yes. And also we have one way when we take the CA have government also set the standard life of each machine. Okay. In Europe and they have calculated the life of press machine only 10 years. And in India, we are considering the 50 year, 25 year. I know very people, they are using the also old machine. They are purchasing in scrap form in other country and rebuilt and using. So that time our depreciation cost will be different. Of course, na ki 63 ton press machine cost. In that calculation, we consider 9,55,300 rupees, and we consider the year of 7. So 100 divided by 7. So per year depreciation cost is 15%. So per year value of depreciation. So our machine cost approx 10 lakh, and the depreciation cost is 1.43 lakh per year. So and we calculate the per stock. So
how to come from this one. Stock on a two shift base. Efficiency of machine 63 ton is 55 SPM. SPM मतलब stock per minute. In general condition, we vary of also SPM. Our company standard is 5.5. Some company have the 10. Some company have the 3. तो जब भी ना आप लोग ये कैलकुलेशन अपने प्लांट में करेंगे ना, बहुत ही आपको मतलब लगेगा कि हाँ यस कि हमने कुछ किया है. तो नाउ वी मूव our efficiency 5.5. Yearly stock we calculate in a 2 shift basically. तो yearly stock कितना आ गया है 14,19,000. तो monthly stock 1.18 lakhs. तो we calculate reverse per day per shift. So we calculate per stock, the number of per minute stock. So that time we calculate 10 paisa. So our depreciation cost of per stock 10 paisa. If the cost of machine cost is high, so depreciation cost also high. Machine cost is low, depreciation cost also low. So during the running cost of machine cost is very major point. Second one is consumable cost. Consumable cost during the production, we are using the some like the hand gloves, some oil, pallet inspection, deburring. So that cost is coming the consumable cost. And what is the thumb rule? What is the calculate method? So it is have no the thumb rule now, no standard formula. Only we calculate in our plant our past experience. In our past, last year, how many consumable gloves we consume? Yeah, we pay the in cost last year in our consumable items. So that is a reverse cost, but it's the also concern in our machine cost. Second is repair and maintenance cost. So now we have the new machine, so we are considering for first 3 year yet 2 year zero maintenance cost. But yes, we need to some repair oiling and the PM. So this is a minor maintenance cost. But sometimes we are using the old machine, that one for reduce our depreciation cost. So that time this cost will be high, some increase. Now is per stock cost is 0.1 rupees. Yani if, that time old condition we use the old machine. That time this cost is 0.1 yeah 0.05 paisa. And also labor cost also major element in our costing. Labor cost we are using the one manpower per machine, and labor cost is in our area 12,000. So of course we are producing the per shift number of component. We calculate the from this section. So cost is 10 paisa. We calculate. And another one, you calculate easily depreciation cost, consumable cost, labor cost, but you need to one CFT support calculation of repair and maintenance and the consumption of power, yeah, air of your machine.
So now this is the we matlab, what motor in use our machine. In 60-ton press machine, we are using the 5.5 kilowatt electricity. So we calculate, this is the process, simple process, but we need to maintenance guys help this calculation. So now we move to our main point. You see in this table, uh, we got 460-ton press machine, 28 paisa. Major role of labor cost, depreciation cost, and third one consumable cost. Sir, one more question. That Yes, yes, machine cost. Suppose machine cost is 10 lakh. Okay. yes, In that, that interest we have to pay some interest also. Suppose we are borrowing the machine in loan basis. Then what cost we have to consider? I think we have to consider that interest on loan also, na? yes, yes, definitely. Okay, We over. also Suppose that consider the loan period is 10 years, then whatever that interest amount, that also we have to consider in that 10 lakh. yes, yes. That time we add the 10 lakh plus we are paying the whole 10 years 2 lakhs of interest. Yeah, 5 lakh of interest. So we add 10 plus 5. So now Correct, correct, we are correct. calculating the machine value is 15 lakh. Correct, correct, correct. Interest on machinery also play a major role. So now a major element of the any one stock rate, yeah, per hour rate of machine. This is the basic concept of calculation. One is depreciation cost, repair and maintenance cost, labor cost, consumption, yani air, power, whose type of consumption in our machine, and consumable cost. So now we calculate for the 60-ton press machine, 28 paisa per stock. So this is the one example. Now we move to second one example. This is the same fundamental, but now we calculate in per meter welding, because now we are take the product is sheet metal product. So we are in that session we discuss only press machine, yeah, welding machine cost. So during the welding machine, we are calculating the MIG welding running cost per meter. So measure same elements. Now is depreciation. We also calculate in the 7-year depreciation, maybe 15%. In this, I think this is wrong. Machine value is 80,000, and per year is 11,000. And now is we do them in yellow color. And Amol, you are working on the sheet metal company, no? Yeah, anyone who is working on a sheet metal company? I think no. Oh, okay, okay. The pace. Uh, so in your company, every welder doing the welding per set, 45 meter or 80 meter, you have any idea? The pace, you have any idea? That one? Yes? No? No idea. Okay. Uh, but we consider the 45-meter welding per shift by the one welder. It value will be changed from the product shape and also location. After discussions of many companies, we found the
one company is 25 meter per shift, and some one company is making 100 meter per shift. It's big difference, and also is depend on cost. So our cost also vary, but yes, it value come from the our if we doing the welding running meter, so we take the our plant value from our past experience. 45, yeah, what 50, 80, yeah, 70. So now we calculate the depreciation cost is 0.88 paisa. If we consider 45 meter welding per shift. Now is same fundas, repair and maintenance 2%, of course 2%, 0.018 paisa per meter. It is also labor cost. This cost also depend on the per meter. We produce now we are 45, and our welder do in one shift 90 meters. So this cost will be only 7 rupees, half that one. So this is the major point. So we try to improve in our plant productivity. How to improve the our welder efficiency, yeah, our operator efficiency. So welder cost is of course is high because more skill required doing the welding. So in last slide we are considering the 12,000. In that one we are considering the 16,000. So per meter is 14.81, and the consumption of uh, per meter welding. It is also we need to maintenance guys, but in the we provide the that sheet in Excel format, so you also put the values and you get the result. And also fifth point is the consumable cost. This is the major point. Wire consumption cost, gas consumption cost, and hand gloves is the no matter, but wire consumption or gas consumption is the major cost. And in gas consumption is also we are losing, we are waste. Very company waste is, I see number of companies in waste is 100% gas. If our thumb rule is 1:2, normal condition for in 0.8 mm wire, if we do the 1 meter welding, so our consumption of MIG wire will be 80 gram only, and our gas consumption is a double, yani 160 gram per meter. But I see ki some companies using 400 gram gas per meter. So this is the two losses. So now is comes the main metrics. First is depreciation, because no matter, because machine cost is very economical, only 80,000. Repair and maintenance, no issue. Major is labor cost and the consumable cost. Consumable cost, MIG wire or gas and labor, of course, the number of meter welding per shift. If we increase the 90 meter, 100 meter, 80 meter, 60 meter, so definitely we reduce the labor cost. But I see a lot of plant is doing the 100 meter, so this cost definitely 20 rupees. But some plant is doing the 25 or 30 meter, so their cost is 30 rupees. So we try to increase the welding and reduce our consumables.
So this is the big welding running cost per meter. Now we move to factory overhead. When we consider the manufacturing cost is RM cost measure, we already discussed on that one. Process cost, we consider two process, one is stamping and another one welding. And now is the factory or overheads. So in factory overhead above than worker, यानी मतलब जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है प्रोसेस में, यानी जो वेल्डर है तो जो वेल्डिंग कर रहा है उसकी कॉस्ट छोड़ के जितने भी हमारे हैं, जो क्वालिटी इंजीनियर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, प्लांट हेड हैं, सबकी कॉस्ट ओवरहेड में आती है. रेंट है या लीज का, अगर हमने लीज पे ली है तो यानी प्लांट की कॉस्ट है, वो सब ओवरहेड में आता है फैक्ट्री ओवरहेड में. फैक्ट्री ओवरहेड जैसे कि ये स्लाइड भी ऑफकोर्स इजिली मिल जाती है. वेरिएबल है, फिक्स है, जैसे रेंट है फिक्स है, सैलरी है यानी जो मैनेजर है सुपरवाइजर है वो फिक्स है, इंश्योरेंस है प्लांट का, मशीन का, इंसान का, वो फिक्स है. अच्छा, इन दैट कंडीशन लेबर इंश्योरेंस इन कंसीडर इन our this one labor cost. Maybe welder cost is 14,000, 2,000 is extra. This ESS, UASS, PF, and other expenses. So salaries है, कुछ taxes हैं, and variable cost you see na power cost, but but is machinery cost we तो already consider machine running cost. This is the our other than machinery cost, मतलब like AC cost, our system, we are system also consuming the light na, so this cost, मतलब other than machine, मतलब use मतलब जो direct machine we are using, extra all this power is consumables like the no factory cost. So now this is the small session for the discussion of product manufacturing cost, but definitely this is the broad topic because my 18-year experience in same field, the automobile or manufacturing. So definitely we picked up some major point and for you, and we discuss in during this small session. So if you have the any questions, yes, Dipesh. Hello. हेलो Yes. सर, डिप्रिशिएशन कॉस्ट में एक बार आप हेलो एक बार Yes. Yes. डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो हमने निकाली है उस स्लाइड में एक बार जाओगे क्या? हाँ आगे. हाँ, तो इसमें जो हमारा पावर जो है, पावर पैरामीटर, उसमें आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है वो हम कैसे निकालते हैं? ये पावर जो पैरामीटर है एक बार समझा सकते हैं क्या? Yes. पावर Power consumption na? Yes, In sir. our machine also we have mentioned in the our machine key consumption of voltage, current, that Mhm. one. तो हमारे मशीन में लिखा हुआ रहता है क्या स्पेसिफिकेशन में? हाँ definitely that. ओके ओके. Hello, sir. Yes sir. A Yes. life of machine, can I consider depreciation period? A life Yes of we machine is also equal to depreciation period. yes we also change मतलब
5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। नहीं, जैसे आपने कहा था कि वीएमसी का जो लाइफ मशीन लाइफ है वो 15 ईयर्स है, तो उसके लिए हम डिप्रेशन पीरियड कितना कंसिडर कर सकते हैं या कितना कंसिडर करना चाहिए? VMC का 15 years is मतलब maximum people are using in the VMC, CNC consider 15 years. डिप्रेशन So पीरियड yes, yes. Uh, मतलब लाइफ depre- ऑफ मशीन इक्वल टू डिप्रेशन पीरियड। yes, yes, yes. यस, थैंक यू। सर आप ये शीट शेयर करेंगे ना ये सेमिनार के बाद? मैंने सर लेट ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है। ये सीट सर अभी हम शेयर कर देते हैं। सौरभ ग्रुप में है ना भाई? एक मिनट, कंट्रोल सी। हेलो सर, एक्सेल में अगर मैं ऐड कर देता हूँ इनको ग्रुप में सर। हाँ, एक्सेल सीट भी शेयर कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीट अभी आपको मिल जाएगी। बाकी जो एक्सेल सीट भी है ना, तो वो भी हम लोग शेयर कर देंगे, इससे रिलेटेड जो भी। Anyone have any questions? Yeah, any input? सर सर क्लास था। Yes. उनका प्लीज कंटिन्यू, देन आई विल आस्क। ओके, थैंक यू। हेलो सर, उसमें जो हमने मटेरियल ग्रेड कंसीडर किया है एफई 410, इसमें और Yes. ग्रेड रहते हैं वो? सीट मेटल के अंदर तो नंबर ऑफ ग्रेड है आज की डेट में। मतलब अगर तो हम बात करें, FE410 है, E34 है, DD1079 है, इवन कुछ कंपनियों ने तो अपने भी ग्रेड बना दिए हैं। ओके, तो सर जैसे इसका yes, इसका रेट कैसे पता चलेगा हमको? yes, ये इनके रेट डेली मार्केट में ओपन होते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, अगर आप चाहें तो उनमें ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है, इवन आई सो just in you are visible my screen, I think. यस। Also we have some group, they are giving the daily rate. ओके, We also join this group कि I think still मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मेरे पास जब आते हैं मैसेज तो मैं देखता हूँ कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो डेली, मतलब वो मटेरियल के डेली जो रेट होते हैं वो हमें मिल जाएंगे इसलिए। ओके, तो हम जो उसका प्रोपोर्शन रहता है कि निकल परसेंटेज कितना है, कॉपर कितना है, तो उसमें भी हम निकाल सकते हैं कैसे रेट? केमिकल नहीं कंपोजिशन हम रेट नहीं निकाल सकते। वो नहीं तो निकाल। जो मतलब कंपनी होती है, जब वो डेवलप करती है तो अपने वो रेट मतलब देती है कि भाई क्या रेट लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली कि हम वो कर सकते हैं। ओके, सर लेकिन जो आरएम के रेट होंगे वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होंगे ना। सपोज आपके पास जो रेट आते हैं मे बी वो नॉर्थ साइड के होंगे, वो एफी का रेट सपोज 80 पर रुपीज केजी हुआ, लेकिन वही अगर पुणे में है तो मे बी शायद 100 रुपीज पर केजी हो, जो भी डेली नहीं के रेट ऊपर वेरिएशन, होगा। नहीं वेरिएशन होगा, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। ओके, हाँ, मतलब वेरिएशन डेफिनेटली वेरिएशन होगा कि हमारे यहाँ के रेट 80 रुपीज है, तो होगा आपके यहाँ के 79 हो सकते हैं या 81 हो सकते हैं। मतलब इतना मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब हार्डली अगर हम डिफरेंस मानेंगे 1 या 2 रुपए का आएगा पर पीस, हार्डली। लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन होती है, जैसे अगर हम बात करें कि जो मेजर स्टील मैन्युफैक्चर है इंडिया में, जैसे टाटा स्टील है, जिंदल है, भूषण है, ये सब जो मेजर मैन्युफैक्चर है, तो ये पूरा मतलब सिमिलर रेट निकालते हैं।
जैसे कि आप देखते हैं ना कि प्रोडक्ट पे एमआरपी लिख के आता है ना, हाँ भाई राइट अगर सर। पार्ले जी का जो बिस्किट है वो मतलब जहाँ पे मैं बैठा हूँ हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे बन रहा है, तो भी हमें वो 4 रुपए का मिल रहा है और आपको भी वो 4 ही रुपए का मिल रहा होगा। तो यस सर, मतलब गॉट गॉट। 90% की रेट कॉमन रहते हैं, यस, लेकिन फिर भी जो ट्रेडर होते हैं वो थोड़ा वेरी कर देते हैं 1-2 रुपए। तो इस तरीके से मतलब रहता है कैलकुलेशन जो मेजर है। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ना जो भी मतलब आपके यहाँ डेफिनेटली अगर आप वर्किंग में हैं तो आप लोग ना कोई भी एक मशीन का ना अपना रनिंग कॉस्ट निकालिए, जो भी आपके पास मशीन है। मतलब मैं ये देखा है कि लोगों को 20-20 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपके यहाँ ये मतलब वीएमसी रखी है, वो चला रहे हैं, कि आपका क्या खर्चा आ रहा है उसको चलाने में, मतलब पर घंटा क्या कॉस्ट आप पे कर रहे हो। तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। सपोज दैट कि हम ले रहे हैं 400 रुपये पर घंटा, लेकिन अगर मेरा 200 रुपये घंटा आ रहा है तो मैं कस्टमर को 300 रुपये पे भी मतलब कंपटीशन देके मतलब काम ज्यादा ले सकता हूँ। और मान लो मैं कस्टमर से ले रहा हूँ 400 रुपये घंटा और मेरा खर्चा ही आ रहा है 420 रुपये घंटा, तो भी मैं कस्टमर को कन्विंस कर सकता हूँ कि नहीं सर, मुझे 2 रुपये मतलब 20 रुपीज पर आवर का लॉस है। तो इस तरह से मतलब हमारे पास जो भी मशीन है, मतलब जहां भी हम काम कर रहे हैं, लोग नहीं करते हैं। इवन ये एक्सरसाइज भी अगर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मेरी खुद की हुई एक्सरसाइज है। और ये मैंने पता है कब किया, मैंने मतलब जॉब स्टार्ट की 2006 में, और ये एक्टिविटी मैंने की थी आई थिंक 2015 में। मतलब मान के चलो 9 साल बाद ये मैंने एक्टिविटी की है। तो मतलब अगर आप लोग करेंगे ना तो एक अच्छा मतलब एक्सपोजर और खुद सीखने को मिलता है। राइट सर। तो मे या यस, टाटा मोटर्स का भी जो स्ट्रोक पर रेट रेट है वो भी फिक्स है, वो कैसे निकाला वो अभी तक मुझे पता नहीं चला। नहीं नहीं, ये जो हमने कैलकुलेट किया ना सर, ये सीट हाँ हाँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, वो अपने नॉर्म्स बनाते हैं। उन्होंने अपना एक एक मीन कंडीशन ले ली। उन्होंने क्या किया, नई मशीन ली और एक मीन कंडीशन ली। हाँ, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है 28 पैसा 30 पैसा जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। ओके। लेकिन हाँ, वो रिवाइज होने चाहिए। उन्होंने रिवाइज। बहुत समय से रिवाइज नहीं किए। भाई आप देखेंगे कि कोविड के बाद से और अभी तक लेबर की जो कॉस्ट है उसमें 40% का हाइक है मे बी, राइट, बराबर सर। लेकिन वो नॉर्म्स वही है। तो डेफिनेटली ठीक है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी एट पार क्या है कि हमें अपनी मशीन का पता होना चाहिए। राइट, मतलब हाँ हमें वो। अपना अपना पता होना चाहिए कि हमारा क्या खर्चा है। राइट राइट सर। तो वो उससे क्या है कि मतलब हमें पावर मिलती है कि डिस्कशन की, कॉन्फिडेंस मिलता है। राइट। तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आलोक सर, क्वेश्चन है मेरे पास में। एक जो पावर वाला आपने पॉइंट बताया ना कॉस्टिंग में, तो जी जी। पावर के लिए मेरे को एक डाउट है। पावर पर्टिकुलर उस मशीन की हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या प्रोपोर्शनली हमारे और जो पूरी फैक्ट्री की लग रही है, ऑफिस लाइक ऑफिस फैन और एवरीथिंग, दैट आल्सो वी हैव टू कंसीडर नहीं इन नहीं सर, पावर, नहीं सर, इन पावर वी आर कंसिडरिंग ओनली दैट मशीन कॉस्ट। पर्टिकुलर मशीन कॉस्ट ओनली। यस यस ओके, यस। करेक्ट करेक्ट। इट अनदर थिंग, हाँ, करेक्ट। and अनदर थिंग, another things comes in the fixed overhead, yeah, variable फिक्स overheads. ओवरहेड। ओके ओके, कंपनी ओवरहेड। Yes yes. ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।